Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to discuss about a topic, homeotic mutants in the Arabidopsis plant, or the role of homeotic genes as a floral organ identity gene. So this topic is mainly from an event that is the flowering in plants. So before starting this particular topic, let's just understand the basics of the flowering. If you are new to the YouTube channel Botany for All, kindly share and subscribe the channel for the upcoming tutorials as well as the previous recorded lectures of the botany. So let's just start. Before understanding the homeotic genes, let's just understand the process of flower evocation. In general life cycle of the plant is having two phases. One is the vegetative phase, another is the reproductive phase. Total दो phase होते हैं plant में, एक vegetative as well as another is the reproductive. The plant remains in the vegetative phase, and after some time, depending upon the type of plant, whether it is annual, biennial or perennial, after some time the reproductive phase comes. So in the reproductive phase, there comes the flowers. Because the reproductive phase or the reproductive part of any of the plant is flower. तो प्लांट का वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में स्विच होना फ्लावरिंग कहलाता है. फ्लावरिंग इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ सेवरल इवेंट्स. फ्लावरिंग जो होती है बहुत सारे फैक्टर से होती है. सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, the series of the process or the collection of those processes. So we will call the events which are occurring in the shoot apex that specifically commit the apical meristem to produce the flowers are collectively referred as flower evocation. तो उन सभी इवेंट्स का कलेक्शन फ्लावर इवोकेशन कहलाएगा जो हेल्प करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लावर डेवलप करने के लिए. बिकॉज सॉइल से जो बिलो पार्ट है दैट इज ऑल कॉल्ड रूट एंड above part of the soil is called shoot. So leaves as well as the branches as well as the main stem, all of these organs are developed from the shoot apical meristem. So the flower itself also will develop from the shoot apical meristem. So there is a requirement of the signals or switching the shoot apical meristem cells to form the flower. एक identification point होता है. There is one identification point in which the central zone, shoot apical meristem क्या है, कौन से जोन है, what are some genes that regulate shoot apical meristem development, that you can see in the concerned playlist. आप anatomy में या developmental biology में SAM का development पढ़ सकते हैं in the separate playlist. So central zone में cells का count बढ़ जाता है, division बढ़ जाता है whenever any of the shoot will try to form the flowers or commit to form the flowers. So the collection of all those events which switch the signal to form the flowers from the shoot apical meristem to the floral meristem, this event or the series of events is called flower evocation. So let's discuss about some examples of those events like circadian rhythms. There are various circadian rhythms that control the floral meristem identity genes or the floral meristem. Phase changes are also the example. Several hormones also initiate the formation of the flowers. Photoperiodism as well as the vernalization. So the light duration, okay, as well as the cold temperature, or we can say the temperature. These environmental factors also control the flowering. So flowering के लिए total दो event होते हैं. One is the floral meristem identity genes. Two types of the gene control the flowering. One are the floral meristem identity genes, which signals the shoot apical meristem to form the flower. क्योंकि shoot apical meristem से ही vegetative cell बनते हैं, उसी से floral meristem cells बन गए. तो particularly वो genes जो पहले identity देंगे, floral meristem बनाएंगे, so that the flowers can be formed. One class of that gene will be called floral meristem identity genes. If you want to study them in detail, I have made a separate video that I will give the link in the description. तो description में उसका link मैं डाल दूंगा, वहां से आप floral meristem identity genes को देख सकते हैं. Second class of genes are called floral organ identity genes. These are the genes, not events. Okay, so two type of the gene control the flowering. One are the floral meristematic identity gene, जो shoot apical meristem को या जो आपका SAM है उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लावर बनाने के लिए. सेकेंड थिंग, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स which itself create the floral organs. अब एक फ्लावर का बनना जब तय हो चुका है after the expression of floral meristematic genes or the floral meristem identity genes, उसके बाद उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर जो होल्स हैं like sepal, petal, stamen
एंड कार्पल। तो इन होल्स को फॉर्म करने वाले या इन होल्स को आइडेंटिटी देने वाले जीन्स की एक अलग क्लास होती है। सो देयर आर टोटल 2 क्लासेस ऑफ द जीन्स। So there are 2 types of the genes which regulate the flower development. One are the meristem identity genes, which give identity to the meristem, to the shoot apical meristem to form the flower. So example of the meristem identity genes are like floricola, which is abbreviated as FLO. So FLO is found in the snapdragon plant or the antennum plant. Similarly, in the Arabidopsis plant, there are several meristematic identity genes like suppression of overexpression of the constants 1, suppressor of overexpression of constants 1. Again, I am repeating, if you want to study about the meristem identity genes in detail, you can refer the separate video, that is the flowering genes. Link I will give in the description. Apitella 1 is also an meristem identity gene in the Arabidopsis. Leafy, LFI stands for the leafy. So leafy is also another gene which control the meristem identity in the Arabidopsis plant. Other than these 3, there are several other meristem identity genes which also control the identity of the meristem to form the flower. Next class is the floral organ identity gene class, in which once the meristem have specifically get property to form the floral meristem, the shoot apical meristem is specifically determined to form the floral meristem. So after that, the flowers will be formed. So once a flower is forming, their organs should be identified, or there should be genes which form the different organs. So that particular class is called the floral organ identity gene class. So example of that is homeotic genes. Homeotic gene is a general class which represent the formation of the organ at a particular पोजीशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, लाइक ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में भी होम्योटिक जीन्स को पढ़ते हैं। सिमिलरली प्लांट फ्लावर के डेवलपमेंट में भी होम्योटिक जीन्स होते हैं जो हर एक ऑर्गन को, हर एक होल को, लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन असाइन करते हैं। सो एग्जांपल ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स आर द होम्योटिक जीन्स। सो इन दिस वी स्टडी द ABCD model, in which I have also previously discussed in a separate video. So I will give a link for the ABC model also. So floral organ identity genes होते हैं homeotic genes. About homeotic genes we will study in detail. So in the event of the flowering, the second type of genes which control the organ identity. The first type of gene control the floral meristem identity. The second type of the floral genes which control the organ identity were discovered by the homeotic mutants in the Arabidopsis plant. जो सेकेंड क्लास के जीन है जिन्हें ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स भी कहते हैं, उनकी डिस्कवरी ही होम्योटिक म्यूटेंट्स के थ्रू की गई थी। मींस उनके अंदर कुछ जीन्स पाए जाते थे जो उनके ऑर्गन्स को स्पेसिफाई करते थे या फॉर्म करते थे कि पर्टिकुलरली सेपल, पेटल, स्टेमन या कार्पल में से कौन सा ऑर्गन फॉर्म होगा। व्हाटएवर बी द ऑर्गन दैट इज फॉर्म्ड बाय एनी जीन्स, those genes were called homeotic genes. तो homeotic genes में म्यूटेशंस की वजह से ही डिस्कवर या आइडेंटिफाई किए गए थे ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। तो ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स जो कि एबीसी मॉडल में 3 क्लासेस में पढ़े जाते हैं, A, B, C में, they were discovered only by the process of the mutation. So once the homeotic genes were mutated, their outcomes were showed. देखा गया कि कुछ फ्लावर जो हैं वो एबनॉर्मली डेवलप हो रहे हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट में सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मीन स्टेमन एंड कार्पल ये बनने चाहिए थे, बट समहाउ कुछ फ्लावर्स एबनॉर्मल डेवलप हुए, मींस आइदर दे आर लैकिंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनमें सेपल, पेटल, ठीक है, कुछ इस तरह से डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं हो पाए। इट मींस द जीन्स which are controlling the expression, their expression for the formation of the reproductive part like stamen and carpel were somehow mutated. तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाने वाले जीन रहे होंगे होम्योटिक जीन, they were somehow mutated and that is why the flower is developing
एबनॉर्मल। तो मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल फ्लावर डेवलपमेंट को देखकर डिस्कवर किया गया होम्योटिक जीन्स के बारे में। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होम्योटिक म्यूटेशंस। सो अल्टीमेटली द होम्योटिक म्यूटेशंस लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। यहां से एक आइडिया आया कि क्योंकि फ्लोरल के जो ऑर्गन्स हैं उनको आइडेंटिटी देने वाले जीन्स हो सकते हैं, एंड दोज जीन्स वर पर्टिकुलरली कॉल्ड होम्योटिक जीन्स। सो द म्यूटेशन इन दोज जीन्स लीड टू द डिस्कवरी ऑफ floral organ identity genes. So let's discuss about them. So let's now discuss that what are homeotic genes. So as I have told you earlier, these are particular genes which encode the transcription factors that determine the locations or positions of any specific organ or the structure. किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब डेवलपमेंट हो रहा है तो कौन से ऑर्गन की क्या पोजीशन रहेगी या क्या लोकेशन रहेगी, उसकी स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करने वाले जो जीन्स होते हैं उन्हें होम्योटिक जीन्स कहते हैं। जूलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स या जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में भी बहुत सारे जीन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं अलग अलग चीजों को। कुछ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को डिटरमाइन करते हैं, कुछ सेगमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, और कुछ ऑर्गन्स की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। तो वहां भी होम्योटिक जीन पढ़े जाते हैं। एग्जांपल है होम्योटिक जीन्स का ड्रोसोफिला में भी, लाइक हॉक्स जीन्स। सो वहीं से आइडिया आया था, या इसी तरह से प्लांट के अंदर भी जो एक फ्लावर है, प्लांट का एक ऑर्गन है फ्लावर, उसके होल या उसके जो सब ऑर्गन्स है उनको भी डिटरमाइन करने, उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के भी जीन्स होते हैं जिन्हें होम्योटिक जीन्स कहते हैं। सो पर्टिकुलरली द होम्योटिक जीन्स गिव द ऑर्गन्स देयर आइडेंटिटी। So there are 3 classes of the homeotic genes. Total 3 क्लास ऑफ होम्योटिक जीन होते हैं प्लांट के अंदर, that I have discussed separately in a video which is called the ABC model of flower development. क्योंकि 3 क्लास हैं, क्लास A, क्लास B and क्लास C। तो टोटल 3 क्लास में 5 जीन होते हैं। These 5 genes are homeotic genes. And according to this slide, and I have also told you, the function of the homeotic genes is to provide organs their identity. तो ये टोटल 3 क्लास में 5 genes identity देते हैं organs को। Their mutations will lead to the development of the abnormal flower. तो wild type की बजाय abnormal जो होंगे वो डेवलप होंगे अगर इनके अंदर म्यूटेशन है। So these particular genes are called homeotic genes. The another example from the animal kingdom is the homeotic genes in the Drosophila. So let's just discuss more in detail. This is the concept that I have also told you earlier, that the floral organ meristem identity gene itself, the floral organ identity gene itself were discovered or identified due to the होम्योटिक म्यूटेशंस। तो होम्योटिक जीन्स क्योंकि ऑर्गन आइडेंटिटी करते हैं, तो उनमें म्यूटेशन अगर हो जाएगा तो उसकी वजह से जो फ्लोरल ऑर्गन पोजीशन है वो रॉन्ग प्लेसेस पर होंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही पाया गया था कि होम्योटिक जीन्स यानी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ऑर्गन आइडेंटिटी को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, एक जीन है एपिटेला 2, ये क्लास बी का जीन है, एपिटेला 2। जनरली एपिटेला 2 जो है वो सेपल और पेटल प्रोड्यूस करता है, ओके। बट अगर इसका म्यूटेशन केस है, म्यूटेशन केस, तो अगर म्यूटेशन कर दिया जाए क्लास बी जीन में, सो इट विल फॉर्म कार्पल्स एंड स्टेमन इन प्लेस ऑफ द सेपल एंड पेटल। सो नॉर्मली सेपल पेटल बनने चाहिए थे, उसके बाद कार्पल, फर्स्ट स्टेमन, सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल। ये वाइल्ड टाइप है, ये नॉर्मल फ्लावर। बट अगर क्लास बी जीन यानी एपिटेला 2 को म्यूटेट कर दिया जाए, इसका फंक्शन लॉस हो जाए, तो सेपल के प्लेस पे भी कार्पल बनेगा, पेटल के प्लेस पे स्टेमन बनेगा, स्टेमन ऑफ कोर्स स्टेमन ही है और कार्पल कार्पल। तो क्लास बी जीन म्यूटेट कर देने पर जो ऑर्गन आइडेंटिटी है वो रॉन्ग प्लेसेस पर जाती है, बजाय सेपल के कार्पल बनते हैं। तो तीनों ही जीन, 3 क्लास के जीन होते हैं, जीन टोटल 5 हैं, तीनों ही क्लास के जीन ए बी सी अगर इनको म्यूटेट कर दिया जाए तो रॉन्ग प्लेसेस पर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी बनती है। दैट इज हाउ दे वर डिस्कवर्ड द होम्योटिक जीन्स। सो लेट्स डिस्कस इन देम इन ब्रीफ, although I have discussed in detail in the ABC model video, so you can refer that video which I have given the link in the description also. तो वहां से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि कौन से जीन कैसे काम करते हैं। फ्लावर डेवलपमेंट में या प्लांट के जो होम्योटिक जीन्स होते हैं, दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ रिलेटेड सीक्वेंसेस, जो पर्टिकुलरली रिलेटेड सीक्वेंसेस
डीएनए पर जो सीक्वेंसेस हैं वो रिलेटेड हैं, तो वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं जो मैड बॉक्स जीन फैमिली कहलाती है. फॉर एग्जांपल, दिस इज वन जीन, दिस इज द अनदर जीन, दिस इज द अनदर जीन ऑन द डीएनए सेगमेंट ऑफ द डीएनए ऑफ द प्लांट सेल. तो सभी रिलेटेड सीक्वेंस है एक दूसरे से, ठीक है, और कलेक्टिवली सभी जीन्स को मैड बॉक्स जीन्स कहा जाता है, MADS बॉक्स जीन्स. तो मैड बॉक्स जीन्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे स्नैपड्रैगन या एंटी हर्नम प्लांट में डेफिशिएंस एक जीन है जो कि एक होम्योटिक जीन है और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है. सिमिलरली अरेबिडोप्सिस के अंदर ए गैमस, पिस्टिलेटा, एपिटेला 3, AG stands for A gammas, PI stands for pistillata. For the detailed description of all these genes, either A gammas, pistillata, epitella 3, epitella 2, epitella 1, you can refer that video, which is based upon the detailed ABC model. So these are the genes which are the homeotic genes in the plant. Deficiency in particularly snapdragon plant or the anti-hernum plant, and in Arabidopsis, the A gammas, pistillata, epitella 3, epitella 2, epitella 1, these are the homeotic genes. So this particular gene family, MADS box gene conserved family, is not only having homeotic genes. Although all the homeotic genes are belong to this family, सभी homeotic genes इसी family से belong करते हैं, लेकिन इस family में homeotic genes के अलावा भी कुछ और gene हो सकते हैं, जैसे कि suppressor of overexpression of constans 1. SOC1 एक जीन है जो ऑर्गन आइडेंटिटी जीन नहीं है, जो मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन है, यानी कि फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन है. होम्योटिक जीन ये नहीं है, ना ही ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है, बट स्टिल इट बिलोंग्स टू द MADS बॉक्स जीन. तो सभी होम्योटिक जीन मैड बॉक्स जीन का हिस्सा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैड बॉक्स जीन के अंदर सारे होम्योटिक जीन ही हो, उसके अंदर फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स भी हो सकते हैं. दिस इज एन समराइज्ड कंसेप्ट ऑफ द ABC मॉडल. क्योंकि होम्योटिक जीन 3 क्लास में होते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास. सो दिस 3 क्लास, 1 A, B, C, these 3 class of genes regulate the floral organ identity. So इनको तीनों क्लासेस को मिलकर ABC मॉडल बोला जाता है. ठीक है, ABC मॉडल को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो में. आई एम समराइजिंग द थिंग्स. क्लास A में 2 जीन होते हैं, एपिटेला 1 और एपिटेला 2. एपिटेला 1 and 2 आर क्लास A जीन. क्लास B में एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा, इसमें भी 2 जीन होते हैं. क्लास C में एक ही जीन होता है, A गैमस. So total 5 genes, 1, 2, 3, 4 and 5. These 5 genes in the 3 classes control the floral organ identity, which is called the ABC model. And all of the 5 genes are homeotic genes. So generally the class A gene contribute in the formation of sepal as well as the petal. The epitella 1, epitella 2 means class A gene forms sepal as well as the petal both. Okay, class B gene forms the petal as well as the stamen. Although exactly the petal is formed by the A plus B, because the A class gene is present in the sepal as well as the petal. The sepal are formed by the only A class gene, whereas petal is formed by the association of A as well as the class B gene. Stamen is formed by the association of B as well as C class gene, and carpel is formed by the solitary gene, that is the class C gene. तो इस तरह से चारों होल वाइल्ड टाइप में सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल डेवलप होते हैं. दिस इज क्लास A gene, these are class C gene and these are the class B gene. Class B gene are associated in the formation of petal and stamen. Either they are present with the A or B. Sepal is associated only with the class A gene and carpel is associated with the only class C gene, or the class C gene only forms the, sorry, the carpel is only formed by the class C gene. So these are the positions in the wild type. So let's just discuss the mutation case also. So if class A gene is mutated, there is the result that the flower will develop like this. In place of the sepal, there will be carpel. In place of the petal, there will be stamen. In place of the stamen, there is the stamen and carpel is
Same. So whenever the class A gene is mutated, okay, there will be the expression of class C gene because they two are antagonist to each other. तो A अगर mutated है तो C express होगा. It means A अकेला जहां पहले था वहां C है, and C form carpel. That is why sepal के place पर carpel है. A plus B forms the petal, but A तो mutated है. म्यूटेशन होने की वजह से ए के स्थान पर सी जो है प्लेस पर एक्सप्रेस होगा, तो बी प्लस सी हम जानते हैं स्टेमन बनाता है, इसलिए पेटल के प्लेस पर स्टेमन बना है. कैसे ये म्यूटेशंस काम कर रही हैं इसको आप एबीसी मॉडल वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ सकते हैं. राइट नाउ आई एम समराइजिंग द थिंग्स. तो क्लास ए म्यूटेटेड होने पर ये बनते हैं. क्लास बी में म्यूटेशन होने पर बी का कोई एंटागोनिस्ट नहीं है, तो जब भी बी म्यूटेट होगा तो उसका फंक्शन रियली में लॉस होगा, उसके प्लेस पर कोई और एक्सप्रेस नहीं होगा. ए म्यूटेट होने पर सी एक्सप्रेस होता है, सी म्यूटेट होने पर ए एक्सप्रेस होता है, बट बी एक्सप्रेस होने पर कोई भी जो है एक्सप्रेस नहीं होगा म्यूटेट होने पर. दैट इज वाई ए प्लस बी था तो वो ए रह जाएगा, बी प्लस सी ओनली जो है वो सी रह जाएगा, और सी अकेला सी था ही, तो ए बनाता है सेपल, फिर अकेला ए बनाएगा सेपल, अकेला सी बनाएगा कार्पल बिकॉज बी नहीं है, एंड अकेला सी बनाएगा कार्पल. So that is all about the homeotic genes. Although it is, I have also conveyed or described the ABC model in summarizing in a summary form, and detail you can study in the description video that I have given the link in the description video. So that is all about the homeotic genes in the Arabidopsis plant. Mainly the homeotic genes control the floral organ identity, as well as there are some other genes which are the floral identity genes or the floral meristem identity genes that you can study in the separate video of the flowering genes, which are regulated by the several factors. So over and all, the flower evocation is associated with the two types of the gene, one that form the floral meristem and another which form the floral organ identity. So that is all for today. Have a nice day. If you really like the video, kindly share and subscribe the channel Botany for All. Thank you very much. Have a good time.